दोस्तों पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था एएसआई प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, और आज के वीडियो में हम आपको एएसआई के बारे में प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। खासतौर से एक प्रोग्रामेबल डिवाइस जो स्लेव को प्रोग्राम करती है उसका किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं।
को इसमें हमको सेट करना है। जैसे ओल्ड से 1 है, यहाँ पे मैंने ओल्ड स्लेब 1, क्योंकि इसमें स्लेब जो है उसमें 1 एड्रेसिंग है, इसको हम चाहें तो उसमें 2 भी सेट कर सकते हैं और दूसरा ऐड कर सकते हैं।